हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ए मिसहैप जो हुआ था यूक्रेन के इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ। सो द एंड वी विल कवर द करंट इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस मंथ ऑफ जुलाई फ्यू। ओके, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ट्रेजिक था और इसके वी विल जस्ट रीड अबाउट द इंसिडेंट्स बिफोर एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव टुडे। ऑन जुलाई 5th 2023 यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मतलब इसी महीने का वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन एंड यूक्रेन, दिस फोर कंट्रीज filed a case against Iran at the International Court of Justice. International Court of Justice over downing of Ukraine International Airline Flight PS752 on कब हुआ था ये? दिस इंसिडेंस वाज January 8, 2020। सो फ्रेंड्स ब्रीफ यही है कि अभी क्यों आया है ये न्यूज में। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑन July 5, 2023 ये चार कंट्री जो है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन, दे हैव मूव टू दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इम्प्लीकेटिंग ईरान, क्योंकि दिस हैपेंड बाय ईरान इन ईरान एंड इट वाज because of the error or whatever, ईरान was involved, कंट्री ईरान was involved। ठीक है, हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। What will you get from this session? You will get information about the incidents. Incidents you know is not so long ago, but 2020 का incidents है। So you will get the information about the incidents, recent development जो कि अभी this case हुआ है, MCQ both on current affairs, that is current events and traditional GK also थोड़ा सा इस सेशन में वी विल कीप एंड वी विल गिव यू जुलाई का फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूज, फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूज। सो वी मूव वेरी फास्टली फ्रेंड्स। तो इंसिडेंट्स क्या था? इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट्स ऑन January 8, 2020 यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन PS752 was shot down shortly after takeoff from Tehran, that is in Iran, killing all 176 passengers and crew on board. The plane was Boeing 737-800 and it was en route to Kyiv, Ukraine. Tehran से उड़ के started from, sorry, Tehran, destination was Kyiv, which is in Ukraine। ठीक है, now we move further। ये मैप में आप लोग देख लीजिए, देखिए लोकेशंस कहाँ पे है। सी दिस इज ईरान, ये है तेहरान, ठीक है, दिस इज यूक्रेन एंड दिस इज कीव। ठीक है, तो ये प्लेन वाज बाउंड फॉर दिस टू दिस, ये था एयरप्लेन का रूट। बट यहाँ पे तेहरान से उड़ने के जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स, दैट इज 3 मिनट्स के आसपास में, इट वाज मिसाइल्स वेर लॉन्च्ड, एक्सीडेंटल फायर बोलिए या जो भी हुआ था, एंड क्रैश लैंडिंग हो गया था। सो फ्रेंड्स आपने देख लिया ईरान और इसके नेबरिंग कंट्रीज आप देख लें। इराक इज ए नेबरिंग कंट्री, सऊदी अरेबिया इज ए नेबरिंग कंट्री, ठीक है, और टर्की, सीरिया, ये जो है लोकेशंस देख लें। हमारा इंडिया जो है यहाँ से, ये हमारा ईरान इतना दूर है एंड ये इस तरह से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द इंसिडेंट्स। द Iranian government initially denied that it had shot down the plane, इन्होंने डिनायल किया था। बट ऑन January 11, 2020, दैट इज 8th को ये इंसिडेंस हुआ था, it admitted that the plane had been mistakenly shot by the Iranian Revolutionary Guard Corps। ठीक है, दिस इज एब्रीविएशन इनका है IRCG, इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि आर्म्ड फोर्स है ईरान का। इट इज ए आर्म्ड फोर्स ऑफ ईरान। ओके, the IRGC said that the plane has been mistaken for a hostile target in the midst of heightened tensions between Iran and United States। तो
प्लेन किस माहौल में उड़ा या किस क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉट अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ वेदर, बट ऑफ द जियोपॉलिटिकल या टेंशंस क्या था, what were the tensions between between United States, that is USA, US या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान के बीच में देयर वाज ए टेंशन। ठीक है, ये टेंशन के बारे में भी विल नो व्हाई दिस टेंशन वाज देयर, एंड in this that plane took off, and so according to Iran it was mistakenly shot down by Iranian Revolutionary Guard. They thought that it is something, a attack on their country, but we'll go further. So 8th January the incidents happened. You remember the date, 8th January 2020, this plane crashed. But before that, on 3rd January 2020, Qasim Soleimani, an Iranian major general, was targeted and killed by a US drone near the Baghdad International Airport in Iraq. ठीक है, while he was on his way to meet Iraqi Prime Minister Adil Abdul Mahdi. ठीक है, सो वी हैव सीन दिस इन द मैप ऑल्सो, अभी भी आप देख सकते हैं इस मैप में, दिस इज ईरान, दिस इज इराक। ठीक है, ईरान एंड इराक आर नेबरिंग कंट्रीज, एंड इनके जो कसीम सोलेमानी एंड ईरानियन मेजर जनरल जो थे, ही वाज किल्ड समवेयर हियर, बगदाद जो है ये बगदाद में है, बाय ए ड्रोन अटैक यूनाइटेड स्टेट्स से। कब हुआ था? दिस वाज ऑन 3rd जनवरी। सो नाउ लॉट ऑफ टेंशन वाज देयर ऑन ईरान। ठीक है, ये देखिए, we will see it in the bigger map. So lot of tension was there in Iran that some action has to be taken against US. ओके, क्योंकि उनका जो है आर्मी के वेरी हाई रैंक्ड ऑफिसर कासिम सोलेमानी एंड इरानियन मेजर जनरल वाज टारगेटेड एंड किल्ड बाय यूएस ट्रूप, सो दे डोंट वांटेड टू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ देयर कंट्रीमैन, सो व्हाट दे डिड इंस्टेड, early hours on 8th January 8th, that is the day of the incidents, IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, Armed Forces of Iran, fired कितने बजे पे? Somewhere around 2:30 AM के आसपास में, morning, very early hours, fired dozens of ballistic missiles on American led coalition forces. कौन से coalition forces हैं? सऊदी अरेबिया है, इराक में भी अपना इन्होंने बेस बना रखा है बगदाद में। सो इन्होंने क्या किया था, ईरान ने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किया था, ऑन फायर डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन अमेरिकन लेड कोएलिशन फोर्सेस इन द बगदाद। ठीक है, तो इनका जो एयरपोर्ट है, दे टारगेटेड, ईरान टारगेटेड ऑन अर्ली आवर्स ऑफ जनवरी 8th। किसको टारगेट किया था? बगदाद में अमेरिकन एयरपोर्ट्स जो बने हुए हैं, उसमें जो एयरपोर्ट अमेरिका के हैं इन ईरान, बगदाद में, सॉरी इन इराक, इराक में जो ये है बगदाद के आसपास, तो उसको टारगेट किया गया था। बट उसमें बहुत ज्यादा किसी भी आदमी के मरने या उस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रॉपर्टी को जरूर, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर डैमेज्ड। ठीक है, सो अर्ली आवर्स, आप यू रिमेंबर, जनवरी 8 2020, IRGC, Islamic Revolutionary Guard, fired dozens of ballistic missiles टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जनवरी 3 के किलिंग के को प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके लिए अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। कब किया? जनवरी 3 को दैट इंसिडेंट्स हैपेंड ऑफ किलिंग ऑफ देयर आर्मी जनरल, मेजर जनरल, एंड जनवरी 8 को दे फायर्ड डजन्स ऑफ अर्ली आवर्स, दैट इज 2:30 AM, टू फायर डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन अमेरिकन लेड कोलिशन फोर्सेस। ठीक है, सो नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग दैट, ईरान वाज एक्सपेक्टिंग, ईरान को क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाउ अमेरिका विल रिटेलिएट एंड अमेरिका विल टेक सम एक्शन। तो उस बीच में क्या होता है, ऑलरेडी देयर वाज लॉट ऑफ टेंशन। सो अराउंड 6:30, दैट इज 4 आवर्स के बाद, 4 आवर्स आफ्टर दैट फायरिंग ऑफ मिसाइल्स बाय ईरान ऑन जनवरी 8 2020, 6:30 आवर्स के आसपास, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस, दैट इज द मिसफॉर्च्यून ऑफ दिस एयरलाइन या दिस प्लेन, PS752, asked for the permission to take off, टेक ऑफ का परमिशन इन्होंने मांगा। ओके, एंड इट हैज टू बी क्लियर्ड बाय द
मिलिट्री ऑल्सो ऑफ ईरान विच वॉज क्लियर हुआ था। एंड 640 मतलब जस्ट उड़ने के बाद में 640 के आसपास में इट स्टार्टेड फ्लाइट। एंड आफ्टर जस्ट 3 minutes आफ्टर द फ्लाइट इट वॉज मिसाइल्स वेर शॉट बाई ईरानियन, जो ये IRGC जो है, दे शॉट ए मिसाइल एट दिस प्लेन। ठीक है, दे शॉट 2 मिसाइल्स, एक से बच गया बट दूसरा मिसाइल आके हिट किया एंड देन दिस प्लेन क्रैश्ड। एंड उसमें कितने थे? 176 पैसेंजर एंड क्रू टोटल। सो नोबडी कुड सर्वाइव इन दिस क्रैश। ठीक है, सो दिस वाज द डिटेल। और अब क्या हुआ है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिस 4 countries, we have seen it in the first slide, United Kingdom, Canada, Sweden and Ukraine, because majorly the passengers were actually यूक्रेन का था, तो यूक्रेन के पैसेंजर्स तो होंगे ही, यूके, कनाडा, स्वीडन के भी पैसेंजर्स थे। ठीक है, सो दे हैव टेकन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये ब्रीफ हो गया इंसिडेंट्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल गो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप देख लीजिए, देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस इन दिस सेक्शंस, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ इंपॉर्टेंस। I will read the questions first. Which country filed a case against Iran at ICJ, that is International Court of Justice, over the drowning of flight PS752? And your options are A, United States, B, Russia, C, China and Iraq, B, United Kingdom, Canada, Sweden and Ukraine, C, France, Germany, Italy and Spain, D, Australia, New Zealand, Japan and South Korea. Under which international treaty did the 4 countries file the case? A, the Geneva Convention, B, the Vienna Convention, C, the Montreal Convention, D, the Hague Convention. Question 3. The International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations, is located at, ये traditional GK से है, A, Hague, Netherlands, B, Sao Paulo, Brazil, C, Prague, Czech Republic, D, Paris, France. So friends, we'll go to the answer of this 3 multiple choice questions. So first question ये था, which countries filed a case against Iran at the ICJ over downing of flight PS752? And the answer, correct answer, we are repeating this thing, B correct है, United Kingdom, Canada, Sweden and Ukraine, because majority passenger from this 4 countries. Okay. Under which international treaty did the 4 countries file the case? So ये है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ठीक है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इज द राइट आंसर। इसके हिसाब से क्या है, द कंट्री जिससे भी फ्लाइट ओरिजिनेट हो रही है या फ्लाइट गुजर रही है, दे शुड टेक ड्यू सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स टू एनफोर्स द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट्स। ठीक है, एंड इसका वायलेशन वाज डन बाय ईरान एज पर द these 4 countries, United Kingdom, Canada, Sweden and Ukraine. So they are fighting a case against Iran in the International Court of Justice based on the Montreal Convention. Question number 3. The International Court of Justice, the principal judicial organ of United Nations, is located at. तो ये located देखिए, ये है Hague, Netherlands. This is the correct answer. This is a question from traditional क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, ये तो आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गया। सम इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परीक्षा सारथी मैगजीन, जिसका कि दिस इज द इनिशिएटिव फ्रॉम द परीक्षा सारथी मैगजीन। सो ये देखिए, जुलाई issue 2 is out, which is covering news from 1 to 15th of July. Where was the 7th edition of Japan-India Maritime Exercise 2023 GMEX held recently? So ये नेवी का एक्सरसाइज है. This has happened in Visakhapatnam, Andhra Pradesh very recently. LF Armada Model 0, the car that can be flown in air or driven on road, was approved in which country? So the answer is USA. Who has been appointed as the chief selector of Indian men cricket men cricket team? So the answer is Ajit Agarkar. Who has won the Canada Open Badminton Championship recently? Very young player from India. Answer is Lakshya Singh. World Population Day is celebrated on which date? So answer is 11th of July. GNPA, that is gross non-performing asset. NPA is non-performing asset, means जिस लोन से 3 months तक ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल कुछ नहीं आया, that is a NPA in the banking parlance.
तो उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन मार्च 2023 रिलीज बाय आरबीआई रिसेंटली 3.9% हो गया है, विच इज 10 ईयर लो, मतलब 10 साल में दिस हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एंड इट्स ए गुड न्यूज फॉर द बैंकिंग सेक्टर. Author of the book The Power of One Thought, Master Your Mind is सिस्टर बीके शिवानी. ठीक है. सो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी मच आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन and staff selection commission and IBPS. So you can purchase bi-monthly magazine, and for purchasing the magazine you can WhatsApp at 9950239676. And for getting the current affairs का टेंशन आप छोड़ दीजिए. So you just subscribe to SSC JHA channel classes, SSC JHA classes. This channel is YouTube channel. Subscribe कर लीजिए and we will take care of your current affairs. So thank you and good luck.